Hello everyone, so I'm Swati Maurya, ex-SD intern at Amazon and currently STE at salescode.ai. So today we're gonna solve the question of the day of LeetCode problem number 2610, which is convert an array into a 2D array with conditions. So basically what's the question it wants to saying is we have given a one-dimensional array and we have to convert this one-dimensional array to two-dimensional array by following some rules. That is, firstly, the each row of that two-dimensional array contains only the distinct element, and we have to make that two-dimensional array which have minimum number of rows. So how can we achieve this array? So सी हम इसको देखते हैं मतलब लाइक हाउ if we think about this, so it looks like कि हमें हमारे पास जो वन डायमेंशनल एरे गिवन है उसके अंदर हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे ज़रूरी नहीं है. वी हैव अ डुप्लीकेट एलिमेंट्स, बट जो हमारी 2D इंटीजर एरे होगी उसके अंदर हमारे पास हर रोज़ में हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट पुश करने हैं. सो हाउ कैन वी अचीव दिस? सो फर्स्टली हमें देखना है कि हर रो में सिर्फ एक एलिमेंट होगा जो कि हर हर रो में एलिमेंट्स जो होंगे यूनिक होंगे. सो अगर हम एक बार हम हमारे पास एक मैप आ जाए जिसके अंदर हमारे पास हर नंबर ऑफ जो भी हमारे पास इंटीजर है उनके करस्पॉन्डिंग वो कितनी बार अकर हो रहे हैं. तो अगर हमारे पास लेट सपोज 2 है जो कि हमारे वन डायमेंशनल एरे में 5 टाइम्स आ रहा है, तो इट्स कंपल्सरी ना कि वो 5 टाइम्स अगर उस हमारे एरे में आ रहा है तो हमारे पास उतनी रोज़ होंगी. बिकॉज बिना 5 रोज़ बनाए हम ऐसी कोई टू डायमेंशनल एरे क्रिएट नहीं कर सकते जिसके अंदर हर रो में डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ रहे हो, राइट? सो हमें बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी निकालनी है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी निकालनी है जो एक पर्टिकुलर इंटीजर की आ रही होंगी, एंड दैट मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हमें बताएगी कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ रोज़ होंगे. एंड आफ्टर दैट हमारे पास एक नंबर ऑफ रोज़ आ गए, हमें उसके अंदर पुश करनी है वैल्यूज़. अब हम उसमें पुश कैसे करेंगे? सो एक पार्ट क्लियर हो गया, मतलब हाउ कैन वी अचीव दिस अप्रोच. लाइक फर्स्टली वी नो कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ कितनी होंगी टू डायमेंशनल एरे के अंदर. सो नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल्स टू मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, right, of a particular integer. So this is the number of rows, and corresponding to each row we have a different number of column, like different number of elements. So ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट्स हैं तो सेकंड रो में भी 2 एलिमेंट्स हो. देयर आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स एंड डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ काउंट. सो हाउ कैन वी नो दिस? हमें खुद पुश करना है. सो फर्स्टली हमने एक मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज निकाल लिया. एक हम लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर वी हैव अ नंबर ऑफ लाइक वी हैव अ लिस्ट रोज, एंड नाउ अगर हमें उसमें पुश करना है सो वी हैव अ मैप जिसके अंदर हमने लाइक 1 के करस्पॉन्डिंग 2 है, 3 के करस्पॉन्डिंग 4 है, नाउ 5 के करस्पॉन्डिंग लाइक सपोज 5 करस्पॉन्डिंग 6 है. सो लेट्स यूज सम दिस पेन एंड ऑल. Let's suppose we have 2 in int number, like if we have an array of 2, 5, 5, 3 and 4. So here 2, what's the frequency of 2 is 1, and what's the frequency of 5 is 2, 3 frequency is 1, and again 4 frequency is also 1. So what is the probable solution of this uh, integer one dimensional array? So firstly 2 comes to here, now 5 needs to come here, again encounter 5. So if we encounter a new element like duplicate element in a same row, we have to create another row, or we have to push it another row which does not contain that particular element. So we create another row, and now 3 can take here, like 4 and 4 can become here. So what's the maximum number of rows are here is 2, and what's the maximum frequency is also 2. So this is the maximum number of rows which we create, that is equals to the maximum number of frequency. And now firstly now we get to know about how much rows we needed. So we need 2 rows, but how we gonna fill this 2 rows, right? So now we iterate on this map and we see like 2 comes one time, so we push it here. So we don't go
for another row, because we have only one element. Now we have 5 which occurs two times, so we have to fill this 5 in each row. So we fill this 5 here and here. Now we encountered 3. Now 3 comes here, we only push it to first row, and now 4 come here, we only push it to first row. Yeah, that's it. So this is how can we achieve this problem, and this is what I mentioned in this code. So firstly, we encountered we have a hash map. We store these corresponding value to store the frequency of each integer corresponding to that integer. So likely wise I did, and parallelly I also updated my maximum frequency by this, and we have a list of integer and which I made by this, and now I iterate on this map and get that key. So this key is basically that particular integer corresponding to which I have a frequency. That frequency is currently going to be here. So this can be a frequency variable. So एंड हमारे पास जितनी नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसीज होंगी, लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे हमने बताया कि अगर 5 हमारे पास 2 टाइम्स आया, तो वी हैव टू फिल दैट 5 इन 2 सेपरेट रोज. सो जितनी हमारे पास फ्रिक्वेंसी आएंगी उतनी बार हम लूप थ्रू करेंगे, एंड हमारी जो हमारा लिस्ट है लाइक 2D एरे है, उनकी पर्टिकुलर रोज में जाके अपडेट कर देंगे. सो या, दिस इज़ हाउ वी कैन डू this question. I hope you understand this question, and my approach is also much more clear to you. So if you have any other approach or solution, or have any doubts, so can please mention in the comment section. So thank you so much.